ओके सो गाइस तुम लोगों ने देखा हुआ है इन ए लेवल फिज़िक्स भी थोड़ा सा कि एक कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो और उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने में इस्तेमाल होती है, राइट। पुश और पुल का एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं, एक फोर्स डिफाइन होती है कि 1 न्यूटन विच इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स is what gives a 1 kg mass and acceleration of 1 meter per second square। जब एक ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए और उस ऑब्जेक्ट का मास हो 1 kg और उसको एक्सेलरेशन मिले 1, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है। हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का मास और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप, which is F is equal to ma। बेसिकली F इस केस के अंदर हमेशा नेट फोर्स को कहा जाता है। दैट इज़ हाउ मास एंड एक्सेलरेशन आर रिलेटेड विद दैट नेट फोर्स। मीन्स कि अगर ये 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ है, 3 न्यूटन फोर्स इस तरफ है और मास इस ऑब्जेक्ट का है जी 3.5 kg, तो हम कहते हैं कि जो फॉरवर्ड फोर्स 10 है और बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स 10 माइनस 3 is equal to 3.5 times a। That gets you 7 is equal to 3.5 a, which is acceleration is 7 divided by 3.5, which is 2 meter per second square। That's the acceleration attained by that particular object। इसके अंदर हम और फर्दर डिटेल्स में भी जाएंगे, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू इंस्टेड फोकस ऑन इज समथिंग एल्स, विच इज़ कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है उस, so in this is like in 2D space, top view, this is the top view of an object which is lying on a ground. Let's model this object as a particle. There is a force of 5 Newton acting on this object, and there is a force upward of, let's say, 7 Newton, 8 Newton. Acting upwards, there's a force of 2 Newton to the left, and there is a force of 6 Newton from the right। ठीक है जी, from the right, ये एक from the left है, एक from the right। So we are able to then say that this object has an overall 4 Newton force acting to the left, and there is an overall 3 Newton force acting upwards। इन दो फोर्सेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाई है। द रीज़न वाई वी से दैट इज़ क्योंकि हम कहते हैं फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जिस तरह ओ लेवल्स में करते थे कि हेड ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द टेल ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। आप फोर्सेस को एज अ वेक्टर फोर्स डायग्राम जो हमने बनाया है एक को उठा के दूसरे पे रख दिया है। what that gives us is the 3 and the 4 combined, not to give us 7 but to give us a resultant force, which is actually the hypotenuse of this right angled triangle। इस hypotenuse की जो size है that amounts to base squared plus perpendicular squared whole under root, which in our case is 5 Newton। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी फोर्सेस की बजाय एक ही फोर्स लगा दो आप, 5 Newton। So 5 Newton force can replace all these forces that you see in front of you, all these 4 forces। अगर ज़्यादा होती तो इसी तरह अगर हम उनको नेट उनकी अफेक्ट निकालते
सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स एक्सिस निकाल लेते, इसको कहते हैं सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स। ये जो अभी हमने 6 - 2 किया था 4 न्यूटन, दैट गेव अस सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स। इस केस में वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड एज पॉजिटिव। ये हमारी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन अस एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। इसी तरह 8 - 5 3 न्यूटन हमने ले लिया अपवर्ड्स। अपवर्ड्स को हमने पॉजिटिव लिया, तो लीडिंग फोर्स हमने पॉजिटिव 8 को रखा, दैट वाज आवर लीडिंग फोर्स, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लिया है। तो हमारे पास ओवरऑल इस वजह से एक 4 न्यूटन और एक 3 न्यूटन फोर्स आ गई। 4 न्यूटन फोर्स को सम ऑफ फोर्स इन एक्स कह सकते हैं और 3 न्यूटन फोर्स को सम ऑफ फोर्स इन वाई कह सकते हैं। और जब आपने इसको सॉल्व किया, ये सम ऑफ फोर्स एक्स था, ये सम ऑफ फोर्स वाई था, और जब हमने इसका रिजल्टेंट निकाला, जिसको यूजुअली हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, देयर आर अदर वेज एज वेल, तो सम ऑफ फोर्स इन एक्स स्क्वायर्ड plus sum of force in y squared whole under root. That becomes our basic formula for the resultant of forces कि x को स्क्वायर कर दें, y को स्क्वायर कर दें, अंडर रूट कर दें। फिर हम इंटरेस्टेड होते हैं यूजुअली कि ये जो 5 न्यूटन फोर्स है ये क्या एंगल बना रही है, लेट्स से विद 4 न्यूटन फोर्स या 3 न्यूटन फोर्स। तो जेनेरिकली हम एक्स एक्सिस से मेजर करना चाहते होते हैं या हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मेजर करना चाहते होते हैं। तो हम कहते हैं कि जी tan ऑफ द एंगल मेड, द एक्यूट एंगल मेड इज राइज ओवर रन समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ एक्स। तो अगर आप tan इनवर्स ऑफ 4/3 कर लो तो आपको एंगल मेड मिल जाएगा अबव the 3 न्यूटन फोर्स। आप ये भी बोल सकते हो उसको, there are other ways of expressing it. So above the 3 न्यूटन है 4, oh I switched them, did I switch them, summation f, oh I switched them। तो ये 3 था और ये 4 था, which means के summation f y 3 था और ये 4 था, so 3/4 का tan इनवर्स लेने से हमारे पास एंगल मिल गया था, the angle made by the force and the x-axis। तो ये जो resultant है, this resultant can be located literally in any of the quadrants। मतलब हमें क्या पता भाई किस quadrant में, it could be in the first quadrant, the third quadrant, द सेकेंड और द फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कहीं पे भी हो सकता है ना ये रिजल्टेंट। सो बात यह है कि आपने ख़ुद सिर्फ अवेयर होना है एंगल के वक्त कि आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स और सम ऑफ फोर्सेस इन वाई आपने किसको कंसिडर किया। मैंने अभी नॉन जेनेरिक तरीके से गया हूँ कि लेफ़्ट को मैंने समेशन एफ एक्स को पॉजिटिव ले लिया। आई कुड हैव instead if I stuck to the conventions, तो मैं rightward force को positive लेता और leftward force को negative लेता। -4 न्यूटन would have indicated कि ये left की तरफ जा रहा है, which means कि -4 मेरे sum of forces x आता और +3 sum of force in y आता। तो -4,3 would have been my समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई, इंडिकेटिंग कि ये किधर लाई कर है। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, बट वी स्टिल ऑब्वियसली नीड टू कवर दिस, और एंगल मेड आपने निकाल लिया। सो डिपेंड्स कि रिजल्टेंट किधर है, उस हिसाब से आप एंगल निकालते हो। यूजुअली हम एंगल सारा एक्स एक्सिस के साथ ही निकालते हैं। अच्छा जी, हैविंग सेड दिस, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी इज नहीं, मतलब हमें एक फोर्स दी हुई हो, लेट्स से 12 न्यूटन,
और ये 12 न्यूटन एक्ट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। हम कभी भी किसी भी फोर्स को दो हिस्सों में या कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये जो दो हिस्से हम हमेशा बनाते हैं फोर्स के, ये ऐसे हिस्से होते हैं दैट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स द that's something which is like important and imperative कि ये जो दो फोर्सेस हैं इनको परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, ये दो कंपोनेंट्स जो बनाते हैं। तो 12 न्यूटन फोर्स के ये दो कंपोनेंट बनते हैं, दो हिस्से बनते हैं। दे वन इज a horizontal component, the other is a vertical component। हमेशा किसी भी फोर्स के दो हिस्से, दो कंपोनेंट्स बनते हैं। ऑलवेज टू कंपोनेंट्स, ऑलवेज 90 डिग्रीज टू ईच अदर, they are always perpendicular to each other। And so if this is 12, this would be 12 cos 30, that's the base। This is 12 sin 30। Why would we have these ratios? That's simply because कि ये base बनती है, और अगर हम cos 30 की बात करें तो हमें ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मिलता है, तो ये इसलिए ये 12 cos 30 होता है। वाइस वर्सा जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास 12 sin 30 आता है। तो हमेशा आप ये काइंड ऑफ याद रखते हो कि एंगल का जो ऑपोजिट मिलता है वो हमेशा साइन होता है, और 90 और एंगल के साथ वाला हमेशा कॉस होता है। तो इस तरह से आप 2 सेकंड में, आई एम प्रीटी श्योर हर एक को याद भी है ये। तो इस चीज़, इस तरीके से कोई भी फोर्स F है एक्टिंग एन एंगल ऑफ थीटा, आप उसको रिजॉल्व कर लेते हो, हिस्से में तोड़ देते हो। दैट इज़ F द सबस्क्रिप्ट x बोल दूँ कि जी उसका x कंपोनेंट इज़ F cos थीटा, एंड उसका जो y कंपोनेंट इज़ F sin of theta। Now comes the idea of the state of equilibrium। Equilibrium is an interesting concept। There's a equilibrium, and within that equilibrium there's another concept of limiting equilibrium। Now limiting equilibrium is like saying that it's the verge of motion, or one could say it's just balanced, things are just balanced, or one could say it's about to move, the system is about to move, it's like on the cusp of motion। तो इस चीज़ को कहते हैं limiting equilibrium। it's reached a limit, it is at its threshold। ठीक है, तो ये however equilibrium की एक वाइड स्टेट हो सकती है। और लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जनरली दो स्टेट्स हैं। एक व्हेन ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब उस पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, मींस कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़ीरो है। या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ज़ीरो है। दिस हैपन्स when net force acting on an object is zero means that the object is balanced and is in equilibrium, means कि all forces that you add along the x-axis cancel each other out, all forces that you add along the y-axis cancel each other out, all forces for any direction or any axis would have cancelled each other out when a system is in equilibrium। तो ये बड़ा important aspect है कि one could say that sum of forces to the right is being balanced by sum of forces to the left। Similarly, sum of forces that are directed up and sum of forces that are directed down are also equal. They cancel each other out।
सो इक्विलिब्रियम की स्टेट, एक ऑब्जेक्ट है, टॉप व्यू देख रहे हैं उसको, अगर यहाँ से एक फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, एंड दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आई जस्ट गिव अ रफ वेग like a ballpark value. All are equally placed. It's like a rotational symmetry of order 3. There's a 5 Newton acting here, there's a 5 Newton acting here, there's a 5 Newton acting here, and everything will be balanced for sure. Anyway, so this system is in equilibrium. If I were to remove this 5 Newton force, that means this 5 Newton was helping counter these two forces by a 5 Newton force. So अगर इस 5 Newton को remove किया जाता है, we will end up getting a resultant of 5 Newton acting down opposite direction. That's like a basic idea that all of us need to have, कि अगर 5 न्यूटन जो है वो आपने रिमूव किया है, तो क्योंकि वो बैलेंस कर रहा था तो उतनी ही फोर्स को बैलेंस कर रहा था जितनी वो खुद है. तो दैट इज़ वाई व्हेन यू रिमूव दैट यू गेट इन जो उसकी जगह वही फोर्स बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट बन जाता है. तो ये एक छोटी सी नीट ट्रिक है जो कि आगे जाके आपको काम आ सकती है. ऑलराइट, देन क्योंकि हम रैपिड एक्टिविटी में हैं, देन देयर इज दिस रूल कॉल्ड द लैमीज थ्योरम. Lamis theorem is basically sine rule. When a system is in equilibrium, we have this concept in physics that when you add up all the forces, they make a closed triangle. If there are 3 or more forces, they will make a, more than 3 होगा तो it will make a closed polygon. तो 3 है तो triangle. This Lamis theorem is basically a sine rule. How does that sine rule work? If there are 3 coplanar forces, means they're all acting in one plane, F1, F2, F3, with angles theta 1, theta 2 and theta 3. F1 divided by sine theta 1 equals F2 divided by sine theta 2 equals F3 divided by sine theta 3. This is what you call the Lamis theorem. इनमें से कोई सी opposite pairs पता होंगे तो let's say F2 पता होगा और theta 2 पता होगा, that's enough to tell any other unknown. F1 unknown है तो theta 1 known है, theta 3 unknown है तो F3 known है. Will be able to solve. इस प्रोसेस के लिए AS की जो बेसिक रूल्स हैं जो इन्वोक करते हैं हम, दे आर साइन ऑफ थीटा इज़ द सेम एज कॉस 90 माइनस थीटा. इस पूरे चैप्टर के अंदर ये एक आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इज साइन थीटा इज़ द सेम एज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन थीटा इज़ द सेम एज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा. एंड इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा, समटाइम्स वी वुड नीड टू डिवाइड थिंग्स एंड tan theta is the same as sin theta divided by cos theta. तो ये बेसिक आइडेंटिटीज़. इन 3 के अलावा आई डोंट थिंक कि हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फॉर मैकेनिक्स के अंदर जो फोर्सेस हैं और ट्रायंगल्स हैं और इक्विलिब्रियम है और रिजॉल्विंग फोर्सेस है. वी वुड नॉट नीड दैट. आई वुड क्विकली वांट टू. Sir? Yes, Nisha? Sir, you only use these ratios when there's a cyclic triangle?
when there's a cyclic triangle, or they say that there is a equilibrium state. It has Okay, sir. to be an equilibrium state, and it has to be just three forces. That's very important, that it has to be just three forces. अगर थ्री फोर्सेस से ज़्यादा हैं, फोर फोर्सेस है, then you cannot use Lamis theorem. Lamis theorem is an acceptable theorem. It makes some of the tricky questions simple, and it is accepted on the So, exam. sir, it works with two forces. It works for three forces, Okay, just three. just three. Now, let's resolve a very important force, which is the weight, mg. When we resolve mg, so let's say this is our weight is acting down. Remember, I said whenever we resolve forces, we will resolve them into components. The components will be two. Those two components would be perpendicular to each other. This is the two components that you are able to resolve this force in. Two useful components. Why are these components useful? Because one gives you the weight component that acts down the plane. All right, so one gives you the weight component that acts down the plane. This is the one which is down the plane. One could say, oh, it's not even on the plane. Well, it's outside the plane, but the idea is कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट कंपोनेंट डाउन द प्लेन ऐसे एक्ट कर रहा है. ऑल्दो दिस इज आउट ऑफ द सिस्टम, बट वो इट्स नॉट रियली आउट ऑफ द सिस्टम, वो बाहर वैसे बनाया हुआ है हेड टू टेल की वजह से. ऑल्दो ये कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है एंड इट्स एक्टिंग डाउन लाइक दैट. I have labeled a few of these angles. This is 90, which would make this angle as theta. This red line is what we will call mg, the weight. Now, the two components that you get, one would be perpendicular to the surface, which is what we would call the normal contact force, or something that contributes to the normal contact force. What's the word? Normal means perpendicular. Contact means the action because of the action. Contact force. So एक ऑब्जेक्ट अगर वैसे पड़ा हुआ है फ्लैट सरफेस के ऊपर और इस ऑब्जेक्ट का वेट है 1000 न्यूटन एक्टिंग डाउन, सो उसी फ्रेजाइल सरफेस या वट एवर सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो भी 1000 न्यूटन अपवर्ड होगा. सो यूजुअली जिस तरह रिजल्टेंट के लिए हमने आर यूज़ किया था, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए तो टोटली हम आर यूज़ कर रहे हैं, वो तो लाइक स्टैंडर्ड है. रिजल्टेंट में तो आप रिजल्टेंट भी लिख सकते थे, एफ भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे. नाउ दिस इज थीटा, द रेड part, the hypotenuse is mg. 90 और थीटा के साथ वाला हमेशा cos होता है, mg cos theta. So this component here is mg cos theta. The one which is acting down the plane is always going to be mg sin theta. It's opposite the angle. So this is mg sine of theta. So for an object, let's say like a glass bead on a smooth surface which is inclined at an angle theta, smooth surface means there is nothing that will oppose it, oppose the motion. The weight component is going to act down. Mg sine theta equals ma, m and m will cancel. Acceleration will be equal to g sine theta. G we know is always taken as 10. 10 sine theta is the acceleration due to gravity. Angle बढ़ाओगे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा. ऑलराइट, सो ये जो रिएक्शन का अगर मैं ये फोर्स डायग्राम को कंप्लीट करना चाहूँ तो ये जो रिएक्शन का एरो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगाया जाता है आर लाइक दैट. And since it's a reaction, it's supposed to be opposite the weight की direction. Or that is why one says R is equal to mg cos theta, because there's nothing else contributing to this reaction. यहाँ तक कुछ clarity है guys? कुछ questions पे आ जाओ मैं? Yes, sir. आ जाओ, ठीक है. अब मैं questions पे आ रहा हूँ. Earlier in the day, we had opened a few papers. Now, one of the papers had the first question. This is one of the latest papers. Coplanar means they're on one plane, have four forces, act at a point in the direction shown. The forces are in equilibrium. Find the values of P and Q. Couple of forces. The 16 force, one must resolve these forces. ये तो important है, that an imperative that we resolve these forces. The 16 is resolved into these blue lines. The P is resolved into these green ones, head to tail. And there is no need to resolve Q or 22 because they're already on the X and the Y axis. The 16 is resolved into 16 sine 55 perpendicular and 16 cos 55 base. The P is resolved into P cos 25 base and P sine 25 perpendicular. Since it's an equilibrium, you can say that forces acting upwards, P sine 55 is upwards, Q is also upward, equals to downward, which is P sine of 25. So that is sum of the forces in X. Then you could say sum of forces in Y is upward, which is, did I do upward first? Oh, I did sum of forces in Y, sorry. Then we do sum of forces in X. Rightward equals leftward. So rightward is 22 plus 16 cos 55 is equal to P cos of 25. So we've got these values. We don't have, so right may and oh, what about 16? What about P cos? P cos 25 is to the left and that's it, right? So koi masla nahi hai. 22 plus, yeah, everything's sorted. There's no Q in that. So why is this 5 marks? God knows why it's 5 marks. In this fx में 22 राइट पे है, 16 cos 55 राइट पे है, लेफ्ट पे सिर्फ p cos 25 है, कुछ भी नहीं है, उस तरफ p आ जाएगा. इक्वेशन 2 में से p निकाल लेंगे आप और उसको आप इक्वेशन 1 में प्लग इन करके q निकाल लेंगे और मुफ्त के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. इट्स ईजी एंड सिंपल बिकॉज इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट. अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन ना होता तो ऑब्वियसली दे वुड हैव एडेड सम डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. All right. This question is again from one of the latest papers. The particle of mass 0.3 kg means 3 Newton acting downwards is held at rest, means 3 forces. This is in equilibrium. How do you know 3 forces? Because they're
attached with light inextensible string. One string is attached at an angle 60 degrees. Now, if you were to draw an imaginary horizontal, then if that is 60, this angle will also be 60 degrees. This would be 90. This would be 120. If this is alpha, this is 90, then this is 90 minus alpha. And this would also be alpha. It is important to note all these things down. The other string is attached at an angle alpha. The tension in the string attached to the ceiling is 4 Newton. So tension is a bidirectional force. Isha, you know this? Tension is a bidirectional force? Yes, sir. Done. So ये हमारे पास 4 Newton is that tension. 4 इधर है तो 4 इधर भी है. So if you just take out ये 4 न्यूटन इधर डाल दिया आपने, 3 न्यूटन नीचे डाल दिया, और ये गॉड नोज व्हाट दिस इज. वो कहता है टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द और अल्फा निकालो. सो दिस इज 4. द एंगल ऑपोजिट दिस इज अल्फा. दिस इज 3. And the angle opposite this 3 is 120 and 90 minus alpha को add करके bigger angle. And what about this? This is 60 plus 90, and this is that unknown tension T Newton. और 4 के opposite alpha था. So if I just simply use the sine rule, this is for 6 marks. So 4 divided by sine alpha, क्योंकि 4 इधर है तो उसके opposite angle alpha है, is equal to T divided by sine of, अब T force ये है और इसके opposite angle जो दो forces हैं उनके बीच में जो बन रहा है, that's 150, is equal to 3 न्यूटन divided by 3 के opposite जो angle बन रहा है वो 120 plus 90 minus alpha बन रहा है, which is 210 minus alpha. So sine of 210 minus alpha. So you notice here कि मैं इसमें से alpha और t नहीं निकाल सकता हूँ. This was my only maybe if I worked with these two, I would have been able to sort things out, but this is causing an issue. I can't really solve it. So Lamis theorem is a little going to fall a little short here. So instead we should have done resolving components. तो t को आपने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, हेड टू टेल, t cos 90 minus alpha, t sin 90 minus alpha. 4 को ब्रेक कर दिया, 4 sin 60 और 4 cos 60. बाकी अगर 90 माइनस अल्फा नहीं करना चाहते थे, यू कुड हैव डन t की कंपोनेंट रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन दिस अल्फा, यू कुड हैव डन दैट. सो एनीवेज t cos 90 माइनस अल्फा इज द सेम एज t sin ऑफ अल्फा. ये डायरेक्ट आ सकता था अगर नीचे वाला एंगल यूज़ करते, t हाइपोटेन्यूज यूज़ करते, t sin अल्फा वुड हैव बीन द हॉरिजॉन्टल. एनीवेज वो मैंने लिख दिया फिर भी. This is t cos alpha. So one can say rightward force, which is t sin alpha to the right, equals leftward force, which is 4 cos 60. Upward force, which is 4 sin 60, is equal to downward force, which is 3 plus t cos alpha. So the trick here is division. We have two equations, or make t the subject, वो भी चल जाएगा. I can say t sin alpha divided by t cos alpha is going to be 4 cos 60 divided by 4 sin 60 minus 3. T and T will cancel. Sin alpha over cos alpha will become tan alpha.
इज इक्वल टू ये कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूजिंग द कैलकुलेटर आ जाएगी एंड यूल टेक tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू and you'll get the value of alpha. You put the alpha back in any one of the equations and you'll get the value of t. Does that make sense, guys? अभी बिल्कुल वो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, so we'll call it a day. यहाँ पे हम इसको क्लोज करें. ठीक है. I hope this was Okay, somewhat sir. helpful. ईशा को फ़ायदा हुआ है तुम्हें? Yes, sir. Yes. ठीक है. So we'll do more of these